A very warm evening, everyone. Logical evening, everyone. So here we go. The Gladiator series for CLAT 2022 last minute prep dose. Now understanding just 4 odd weeks in our hands. And if we have to have preparations for CLAT, your mock test, your sectional test should be impeccable. So in today's practice series, VMTC2262, here we go with the legal reasoning section. Before starting with it, I think to everybody who's right now checking out the session, faith and trust is the key. During the last few days, when you are preparing for an exam, mind well, you have given it a long time, you have prepared well. Last few days are important, but are not the only factor that will determine your success. Believe in yourself, believe in the work that you have done, and trust your mentors. No matter where in the country you are taking classes, whatever your mentors are saying is correct because they best know you. Understanding that part well, I suggest everybody, worrying is stupid. It's like walking around with an umbrella waiting for it to rain. So don't attract that pessimism. Be optimistic. Work out, understand the ball game of the paper, and give your personal best. I think that is technically all. Again, push yourself hard in the last few days, and no one is going to do for you, so you have to do it for yourself. Understanding that point well, yes, there are few other things as well lined up. Vidhigya India Open Mocks, which would be scheduled. CLAT Cam is always much in demand, and G Crackers. Chalo. I come to the sectional test 2262. Now, when I talk about this sectional test of legal reasoning 2262, what was it about? I could see that there were 8 passages, and in total we had 40 questions. These 8 passages were from A, right of private defense, criminal law, kind of easy, and I hope you'll concur with me. Malicious prosecution from torts was easy. Then again, bailment from contract, easy. Protection against double jeopardy, constitution, quite moderate. Agreement and restraint of legal proceedings from contract, again kind of easy. We had a similar question in CLAT 21 as well. Hijab judgment, something adding that contemporary flavor. It was a bit moderate to difficult. US abortion laws, it was contemporary international, it's quite moderate to difficult. And again, trademark and passing off, it is intellectual property laws, kind of moderate. So this was the in total what was this test all about. Before going ahead, I'll tell you that in this test we'll be discussing about these topics as well. A brief recalling our memories as to what these topics were. All right, going ahead. Kaam ki baat. Performance appraisal. So I believe that this CLAT 22 Gladiator medal, and when you check out the stellar performance, in my opinion, good attempts were 40. I would with lot of conviction say so. The good attempt, at least for a Vidhigyan, should be nothing less than 40. And the time for this should be 35 to 38 minutes. That's all. Anyone who has got 35 or more question correct, stellar performance. Fantabulous. Anyone getting 32 and above questions right, it's quite good performance. Acha hai. Anybody having 30 or more questions correct, it's a decent performance. Average performance, average is, not very appealing. Average is kind of number would be 24. Or agar kisi ke 22 se kam hai, to need to improve. You might find I keeping benchmark a bit higher, but that's a usual way, the way I go. Because if you got a good paper at hand, you need to mint maximum marks, and if even there you fail to, you need to understand what these competitive exams are all about. They're about relatively performing better than your competitors. In my opinion, this is what it is. No matter good, bad, right, wrong, whatever you feel. I mean, this is the first feeling that I had. I'll call 22 or less needs to improve. Average was 24 hours average performance, decent performance 30 plus, and you see a big number difference. Yes, for me, this 3 were like good score on board. All right, many kudos to you, Sakshi. Seems a decent score. If you're scoring 35, it's good. Needless to delete your message. All right, going ahead. फटाफट शुरू करते हैं. When I talk about offset method, you already know that whenever we'll see a passage, we'll try to find what this overall passage is about, where are the principles of law laid down, what is the criteria, because we find a lot of questions coming directly from criteria, so that's good going. Exceptions,
What are the exceptions in that law? And finally, the dates of applicability laid down. Ria, that's good. That's good. All right. So when I talk about this offset method, you should be good at it. You should be decent at it. So with this point clear, I think we need to go into the passages. Passage shuru kare. We'll go a bit quicker than usual. Huh? All right. ये आप लोगों को मालूम ही है. I've been telling umpteen times, so needless to repeat. Borrowing some time, going a bit faster. Focused mind. This is what legal reasoning requires. Prerequisite. ठीक है? चलो. Passage 1. Passage 1, when I precisely talk about, is about right of private defense. When we talk about right of private defense, we have done so much so about right to private defense in already in criminal law. So when I talk about right to private defense, we need to know this concept really, really well. This concept, similar concept we find in law of torts and law of crime as well. Basically, what does it mean? That any person who is put to imminent threat has a right to use reasonable force in order to protect him. And in such case, what are the three essential things that one must know? Where right to private defense start, when it accrues, when it ends, and most importantly, when we talk about when it ends, we need to know that entire story really well. Then the quantum of force that one can use against the aggressor in case of private defense, so we call it reasonable force. So I wish that if you have gone through this, the centrally positioned thought in this passage is that if somebody has used force in order to defend himself from an imminent threat and caused harm to another person, so it will amount to no offense, and the justifications were given, and then there were explanations that how much force can be used, when right of private defense is not available, and against whom it is available, and what are the cases where right of private defense is available against person and property. So I think a very simple passage, so would not give it much time. Straight away, good time to go into the questions, and let's have question round a bit faster so that we can mutually enjoy. There are two people, they are enemies for a long time. Every story is written. Now, you know, I love drafting this question using this word. Now, this word, if you could not interpret well, you are done with the question. आपका आंसर गलत हो जाएगा. Here, a person is running towards another person with a percussion mallet. Percussion mallet समझते हो? वो ड्रम बजाने वाला. कितना ही होगा वो? ड्रम बजाने वाला जो डंडा होता है, that stick is called percussion mallet. So with percussion mallet, if someone is running towards you, so what kind of force you can use? In this case, he pulled out his gun. So the force use is disproportionate. So come on, फटाफट with answers. It's a no-brainer. अगर ये word समझ में आ गया, then answer is done. It's D Delhi. Great going. Wonderful. आगे चलते हैं. Next. In question number 2, which of the following will fall under right of private defense? Which of the following will fall under the right of private defense? Here we are able to see there are two goons having knife. The person has tagged them both. Yes, it is private defense. Security guard, 10 armed men. Yes, it is private defense. So what would be the answer? Allowed in both. So answer to question number 2 is always C, Calcutta. Going ahead, I mean, it's a no-brainer. It's a no-brainer. अविरल तुम्हारा गलत हो गया होगा क्योंकि तुम्हें वर्ड समझ में नहीं आया होगा. So going third, C was driving on road when saw some altercation taking place between D and E. When he saw D was slapping. So somebody slapping another person, what kind of force you can use? You can use force which is proportionate. What did he do? He saw that the man was goon, so he, in this case, killed him immediately by charging his car upon this. Now, what does it show? It shows excessive. Now, it's again an excessive harm caused. All right. So, in this case, again, we have a clear idea. He is guilty. Ye galat. I think no brainer again. It's simple. 3 is A. All well. Good going. Let's go to the fourth one. Rotam Radnani, a businessman. There were two suspicious men. He was about to enter. Now you please understand this air pistol. It's a pellet gun. You know,
You need to understand gun and again from a distance of 150 meters. Now 150 meters, he finding assailants coming towards him, and these assailants are having knife. They're taking knife out. So when you understand this air pallet guns, वो जो जिसमें छोटे छोटे पैलेट्स छर्रे डलते हैं वो छोटी वाली बंदूक होती है. So in this case, it is not the actual gun firearms, right? So in this case, and pallet gun is usually non-lethal. उससे death नहीं होती. So the answer is simple. As he acted in private defense. B. Bombay seems correct. Pallet gun का meaning मालूम होना चाहिए था मार्क करने के लिए. फोर्स को एक्सेसिव बोला तो मतलब पैलेट गन समझ में नहीं आया है ना. चलो, गोइंग नेक्स्ट. अक्षय विमल saw four men coming towards him late night with construction tools. He took his gun out and shot. Now four men, चार मजदूर आ रहे थे घर की तरफ, सामने से निकल रहे थे. He took his gun out, so there was no threat, there was no right to private defense. Whatever was done was excessive. So the answer is quite simple. That was the court right in acquitting him? Answer is definitely not. Answer is B. Bombay. Making sense? Going to the passage 2. I told you we'll go a bit quicker. Passage 2 is about malicious prosecution. When we talk about the tort of malicious prosecution, what are the requirements? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में एक झूठी क्रिमिनल कंप्लेन लिखवाई हो, ये जानते हुए कि उसके पास कोई जस्ट रीजन, कोई फेयर रीजन नहीं है, जानबूझ के मैलिशियस इंटेंशन के साथ एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी हो. इनिशिएट हुई है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, उनका रिजल्ट ये आता है कि फाइनली कोर्ट उस पर्सन को एक्विट कर देता है. ऐसे केस में वो पर्सन जो एक्विट हुआ है वो कोर्ट में, सिविल कोर्ट में एक प्लेंट फाइल कर सकता है. जो अक्यूज था क्रिमिनल केस का, वो अब प्लेंटिव बनकर जिसने उसके अगेंस्ट में ये झूठी कंप्लेंट विद मैलिशियस इंटेंशन लिखवाई थी विदाउट जस्ट एंड रीजनेबल कॉज, उसको स्यू करके उससे कॉम्पनसेशन ले सकता है. So that's the idea. When we talk about the passage, the things which I have marked in red makes more sense. So you can always, refer by pausing this video anytime and check that out. Malicious prosecution is abuse of, these are the justifications written for the passage. Tort of malicious prosecution is quite clear to us. So in my opinion, when we talk about the tort of malicious prosecution, this is the basic thing you must know. And what is the most essential element? कि कोर्ट ने ऐसे पर्सन को एक्विट किया हो, फाइनली फाइनल ऑर्डर हो एक्विटल. मतलब तभी तो बोलेगा ना मेरे अगेंस्ट में झूठी कंप्लेंट थी, है ना, वरना तो कंप्लेंट सही थी. अगर कन्विक्शन हो गया तो सही में क्रिमिनल था वो. लेकिन अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में एक झूठी मैलिफाइड इंटेंशन के साथ विदाउट एनी रीजन व्हाटसोएवर एक क्रिमिनल कंप्लेंट इनिशिएट कराई जाए उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए, हरास करने के लिए, ऐसे केस में जब कोर्ट उसे एक्विट कर दे तो उसका राइट है कि जिसने झूठी कंप्लेंट लिखवाई थी उसके अगेंस्ट में एक टॉर्शियस क्लेम सिविल सूट में फाइल करके कॉम्पनसेशन मांग सकता है. To everyone who's right now live, around a good number of students, so if you have a doubt you can always ask me in this. If the concept is clear, I think we'll rush on to the questions because I have explained you the basic things which are already written here. So we can go faster because in the later half we have some good passages coming for us. All right, so questions kare, chalo, let's go. Now the two people, Arbaz and Molaika. Arbaz and Molaika were married for 4 years. They were actors and things don't go well. काम की बात क्या है? Lodged an FIR accusing him of domestic violence. He was alcoholic and physically abused and tortured her. Arbaz has his own loss. Later criminal proceedings for domestic violence were initiated. And it was found that the claims made by Molaika were not true. An attempt was to get rid of वगैरह वगैरह. But they got divorced and now he filed the suit for malicious prosecution. Now looking into this question, we have a very clear understanding that in this case, malicious prosecution suit which is filed by Arbaz will succeed. Answer is D, Delhi, without any iota of doubt. Going with 7th question, which of the following is a fit case for successful remedy under tort of malicious prosecution? Now, this is seemingly, this seemingly is what? When I talk about question number 7, it's defamation.
not malicious prosecution. And again, similarly, so the essentials for the tort of malicious prosecutions are not made out in neither of the cases. Seventh seems like in neither of the cases. All right, Vidhi Vajpayee, correct. Now going ahead, R and S were the owners of shop on opposite side of the same street, sold edibles. This entire story I'm just trying to mark because these passages are available with you. You have already you know solved it. So we'll just try to see where you're cutting wrong, going wrong. I very well understand that the time is of value to you and me both, more specifically for you, because in the final hours we should try to save more time possible. But again, the analysis without clarity of mind is technically of no use. तो वो देखते हुए हम लोग करते हैं. यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट एक्स वाज अडल्ट्रेंट. अब क्या है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस इस एरिया में आके फॉल करते हैं, जहां मैं किसी को हैरास करने के लिए उसके अगेंस्ट में झूठी कंप्लेंट लिखवा तो देता हूं कि वो चोर है, लेकिन जब उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन होती है तो सही में चोर निकल आता है. क्या इंपॉर्टेंट है? कोर्ट का एक्विटल. पर यहां क्या हो रहा है, यहां पे तो सही में फंस गया. अगर वो यहां पर सही में फंस गया है in this particular question, then we get to understand that though it was without just and reasonable cause, but it was real. So in this case, nothing but B is the most suitable answer. Allegations are not to be true. Somebody is saying D. D is never the case. It's B, Bombay. All right. अविरल गड़बड़ करके आते हो, ध्यान रहता नहीं अपना. Okay, coming to question number 9. In the case where mere FIR lodging alleging that the plaintiff wrongfully took a bullock cart belonging to the defendant and requested something should be done, the plaintiff was neither arrested. जब प्रोसिक्यूशन ही नहीं हुआ, ट्रायल ही नहीं हुआ, तो क्या टॉर्ट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का भी हो भी सकता है? क्वेश्चन इज इट इवन मेंटेनेबल? आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट. ए और सी में एक्विटल हुआ नहीं तो ये गलत. Yes, is the case been instituted against the plaintiff? ये भी गलत. Yes, there was malicious intent found. Wrong. So understanding all these things, we get to know that it's always A, Agra. Right? Going ahead with question number 10. Plaintiff was sarpanch of a village. Defendant number 1 was working as a gram sevak, वगैरह वगैरह. Now in this case, what has happened? He was later acquitted. They plotted against him, malicious intent के साथ criminal proceedings and acquittal. When these two things are made out, then our answer is very clear. Will he succeed? Yes, he will succeed. As he was a sarpanch, he has an image to maintain. This is not a good reasoning. यहाँ तक तो ठीक है. Yes. And yes, with the intent behind the prosecution was found malicious. This makes sense. This is wrong. This is incorrect. All right. समझ में आ रहा है? चले आगे. 10th is C, Calcutta. Now going to passage third. Passage third, when I talk about bailment as a concept, is very well known concept. When we talk about the concept of bailment, what does it mean? Concept of bailment simply mean that when you give your goods to another person for a specific work, after that specific work is done, it's your duty. I repeat, after that specific work is done, it's your duty to return those goods. That's the duty of bailee. And when I talk about the duties of bailer, matlab, to keep it short, every student attending this session, bailment का concept, duties of bailer, duties of bailee, gratuitous, non-gratuitous bailment, ये clear होना चाहिए. यहाँ पे passage देखे तो लिखा है duty to take care of bailee. कितनी केयर? जितना एक ऑर्डिनरी पर्सन एक सिचुएशन में रखता. देन ग्रेचुअस बेलमेंट हो या नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट हो, मतलब मैं अपना सामान आपके पास रख के चला जाऊं, आपको भले उसके बदले में कुछ मिल रहा हो, गेन या नहीं मिल रहा हो, दोनों में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है कि आपको सामने वाले के सामान को इतना संभाल के रखना है जैसे कि वो आपका खुद का सामान था. ऑलराइट, रीजनेबल केयर. बेली शुड नॉट मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स बेल and duty to return goods वगैरह वगैरह. This is being told. So the passage is something which has been done many times by us. तो आगे चलते हैं सीधे questions में.
Mr. X planned a holiday to Goa, decided to hand over his car to his neighbor, Mr. Y, for servicing and safekeeping, while Y thought to take a road trip. सर्विसिंग और सेफ कीपिंग की वाली गाड़ी को रोड ट्रिप पे ले लिया, अनऑथराइज यूज है, कैन क्लेम डैमेजेस, आंसर इज यस, क्वेश्चन इज ओवर. क्वेश्चन नंबर 11, आंसर इज यस. एनीबडी हैविंग एनी डाउट कैन ऑलवेज ब्रिंग इट ऑन. आगे चलें. ऑलराइट, गोइंग विथ क्वेश्चन नंबर 12. X was going on holiday. He asked his neighbor Y to take care of car. Y got the car parked in front of his house. So now the car is in possession of Y. The contract was not for any money. That means it was a gratuitous contract. And X car was stolen from Y's house while Y was in garden trimming his plant. That means shows that he did not take the reasonable care. Mr. X has claimed damages for the breach of bailment contract. Will Y, again from Y, will he win? Now, understanding this question simply, question number 12, I'm simple, he will win, and idea is not because because he should have taken as an ordinary person would have taken the thing of someone. So simply question number 12, the answer is C, Calcutta. Alright. Question number 12, answer is not A, Mahi. It's wrong. Question number 13. Which of the following is a valid contract of bailment? Given a dog for a day, bailment हो गया. एक ring उसे मिली that belongs to former. B tells him to hold, again bailment हो गया. Both 1 and 2. 13th answer is always C, Calcutta. Let's go to question number 14. Now question number 14, A entered into bailment with his security guard to take care of his bicycle. Of course, security guard didn't lock up, now shows negligence. The answer would be will succeed. Of course, yes. Now when I see yes, the bailey guard was under duty to take care, it's making sense. Ye galat. Yes, because as he should have taken care of it. Yes, as the bailer was guard under a duty to take care of goods. Now in this question number 14, when we talk about this story of a guard, why answer A and why not C and D? This is a question that might come to many minds. Just look at this. The bailer, the guard, first of all, he is bailey. Okay? Yes, as he should have taken care of it. Why he should have taken care of it? Because he was under duty to take care of that goods, and that's the effect of bailment. A is a more appropriate answer than C. Going with question number 15. Quicker. Now it's the story of a farmer. He goes for 15 days. He leaves his sacks of lentils till he comes back. Proper care and caution हुआ, लेकिन very heavy rainfall हुई, which is unprecedented. अब ऐसी rainfall, बारिश के मौसम में बारिश होना, a person should take good care. Okay, अंकुल प्रजापति सो मत जाया करो. And tells him to hold till he gets back. उसको ये बोल दिया कि आप इसको अपने possession में रखो. अंकुल प्रजापति, here is your answer, which I marked. All right. Coming back to question number 15. Coming to question number 15, the idea is very clear कि इस केस में एक पर्सन जितना एक सामान का ध्यान रख सकता था, ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन की तरह रखा. अगर नॉर्मल बारिश से डूब जाता या बर्बाद हो जाता तो पर्सन वुड हैव बीन लायबल. व्हाट इज रिटन? इट वाज एन अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, मींस वेरी heavy rainfall which was not precedented, could not be predicted, hence could not be avoided. The answer in this particular case goes simple, that A will not succeed. And when I say A will not succeed, B and D making more sense. Contract was gratuitous is a wrong reasoning. Now I got this, but I'll also read this and this to eliminate. ये भी नहीं, ये भी नहीं. Alright, most of you marking B, Bombay. Let's go ahead. A and B entered into a bailment contract where A will park his car in B's house before leaving to office, and then B will drive to A's home and then hand over keys to A's wife. He never delivered car. What did he do? He violated the terms of bailment. What is an basic law of contract? Nahi. Yes, as he did not dispose car as per the directions of A.
Making sense? Wrong and wrong. The answer is C, Calcutta. 16th is C, Calcutta, not A. It is basic law of contract की बात नहीं हो रही, यहाँ bailment की बात हो रही है in specific. All well. ठीक है? Now, with this, we move on to the next topic. This topic is interesting. To everyone, let me tell you at Vidhigya, I always say that 17 sessions of constitutional law is a bare minimum requirement without which this topic cannot be understood. If you have made up your mind discounting constitutional law, trust me, every passage that you are going to read in the CLAT exam, more specifically, where an author is trying to say that a law is not a good law or criticize a law, they will always restore, they'll always go back to constitution, and the constitutional provision will come in different lights. I mean, to criticize a law, what do a person do? The refuge is sought in the provisions of the constitution, which is why I tell everyone you should be good at it. Now when I talk about article 20, I again say that I'm very bullish, and I'm very um, having a very clear mind and a great bias, I should say, that say Article 20 of the Constitution might find place in the upcoming CLAT exam. So in Article 20, you learn basically three things. Article 20, Clause 1 is protection against ex post facto law. Article 20, Clause 2 is about protection against double jeopardy, and Article 20, Clause 3 is protection against self-incrimination. Please, these three topics you should have good clarity. Now, topic at hand is protection against double jeopardy. In this passage, what author is trying to say that when US Constitution was incorporated by its Fifth Amendment, incorporated the principle of double jeopardy within its system, saying no person shall be twice put to jeopardy for of life or limb. Now, then he compares that American protection with its Indian equivalent, that is Article 20, Clause 2, and says that in under Article 20, Clause 2, it's written that no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. So no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. Now please understand the word that you should be focusing upon whenever you get such passage. Prosecuted और नहीं लिखा, and लिखा है. ठीक है. Now he is saying that we'll compare this Article 20 Clause 2 with American and British equivalents. Now they say in America what happens, एक बार अगर किसी का प्रोसिक्यूशन हो जाए, उसके बाद क्या होगा? ट्रायल का अंत. ट्रायल कैसे कल्मिनेट होगी? या तो एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा, या तो सजा मिलेगी या तो नहीं मिलेगी. तो यूएस में ऐसा है कि एक अपराध के लिए उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एक पर्सन के अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन हो गया तो सेम ऑफेंस के लिए उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता. टू दी कॉन्ट्ररी, when we talk about India, in India what is done? To the contrary, in India the law is, we need to understand this, to the contrary, in India the law is prosecuted and punished for the same offense more than once. First of all, let me draw a clarity only with reference to Article 20 Clause 2 I am saying. अभी मैं सीआरपीसी में जाऊंगा तो मतलब कुछ और हो जाएगा, इसलिए मैं सीआरपीसी नहीं बोल रहा. करेक्ट सूजल, लेट आए, टाइम से आना चाहिए था. ऑलराइट, नाउ हम लोग इस पैसेज को समझें. नो पर्सन शैल बी, इंडिया में क्या बोलते हैं? प्रोसिक्यूटेड भी हो और पनिश्ड भी हो तो दोबारा नहीं हो सकता. मतलब प्रोसिक्यूटेड हो और एक्विट हो जाए, सजा ना मिले तो दोबारा प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है. ये इंडिया का मतलब है. मतलब इंडिया की प्रोटेक्शन कम है और यूएस की प्रोटेक्शन क्या है? यूएस में अगर एक बार प्रोसिक्यूशन हो गया, सजा मिले ना मिले, पनिश हो ना हो, उसके अगेंस्ट दोबारा प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता. तो द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ प्रोटेक्शन रेंडर्ड बाय द अमेरिकन एंड द ब्रिटिश इक्विवेलेंस ऑफ डबल जेपर्डी is much more wider than what is provided under Article 20 Clause 2, which state no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. So this passage was all about this. But और फिर उन्होंने क्लियर किया
पूरी कहानी में यही क्लैरिटी उनने ला दी और फिर ये एक एक्सेप्शन बता दिया कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में नहीं होता. सो हैविंग दैट पॉइंट क्लियर, let's go into the questions. X is a convicted felon. He discovered that he has murdered and when committed the theft, दो ऑफेंस, एक ऑफेंस ऑफ मर्डर, दूसरा थेफ्ट. The prosecution wants to charge with murder. No person shall be prosecuted and punished for the same offense. मतलब थेफ्ट के लिए या मर्डर के लिए एक बार अगर प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट हो चुकी है तो दोबारा नहीं होगा, लेकिन प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट तो थेफ्ट के लिए हुई, मर्डर के लिए तो हुई नहीं. सो गोइंग सिंपली बाय दिस क्वेश्चन, A and C. The prosecution succeeded, the protection is narrower than US. The prosecution will succeed at X was only convicted for theft, therefore does not protect. This is more clear. Wrong. Answer is C, Calcutta. Great going. Everybody is with me, so I need not go into the deep explanations. All right. Now going to the question, the next question. Question 18. X is a police officer who was caught in act of absence from his duty without informing his superiors. Now उसमें लिखा है ना डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट नहीं मानते, तो यहीं पे मेरे को अपना आंसर समझ में तो आ गया. स्टिल आई विल रीड. It was found that he regularly missed and later a case was filed under Indian Penal Code and Prevention of Corruption Act. Now please understand, in the last line it's written that departmental proceedings cannot be equated as prosecution and punishment under Article 20 clause 2. So very simply saying question number 18, X will succeed, no, ये भी गलत. Will not say public are covered, this is extraneous, this is nowhere written. Someone from heaven has borrowed this reasoning. X will succeed as the offense for which he is charged is continuing offense, again nonsense. D, Delhi is the answer, no doubts whatsoever. चलो, I hope I'm explaining you, वरना इतना सारा ये explanation पढ़ना, my good God. So you're going a bit faster, exempting you to read so much. All right. Which of the following can be inferred from the passage? Now, next question is which of the following can be inferred from the passage? Only a person who's charged with criminal offense can take protection against Article 20. Now, when we see this question, ऐसा नहीं है. A person who's under Article 20 are exactly the same person as in the principle is different. The Constitution of India is in essence is more liberal. Extraneous cannot be determined. The principle of double jeopardy is much wider scope in US than in India. Absolutely correct. This can be inferred. Going ahead, simpliciter. Question number 20, Article 20 clause 2 में से कौन से केस में protection can be granted protection under Article 20 clause 2? Can be granted protection. 20th. X is charged of rape then subsequently charged with murder. Can be given a protection. है ना? नहीं मिलेगी. एक offense rape था, दूसरा murder. X is acquitted on the charge of rape. Constitution of India में prosecution and punishment चाहिए, तो acquittal and then charge with offense of murder नहीं मिलेगी. He is convicted for rape and imprisoned, तो prosecution and punishment, and now a case is filed to increase. Now same offense के लिए दोबारा हो रहा है. Yes, this is my answer. Right? Mr. X is charged with no. Below are two factual scenarios. Which of the following cases double jeopardy can be granted in US? Now US में क्या है, बस prosecution होना चाहिए. अगर सिर्फ prosecution हो गया US में तो काम हो गया. You getting me? Only prosecution is required when it is the case of US. Punishment required नहीं है. A is acquitted, मतलब prosecution हुआ है and later an additional evidence was found. तो ये US के हिसाब से तो double jeopardy है.
इज यहाँ एक्विटल हो रहा है, कन्विक्शन हो रहा है, फर्क ही नहीं बन रहा, दोनों केसेस में डबल जेपर्डी है, आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2. 21 इज बोथ 1 एंड 2. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड डाइजेस्ट दिस वन. हो रहा है ना, आ रहा है ना समझ में? आई नो आई एम अ बिट फास्टर, but I hope you're able to understand this, right? All right, let's go. Going next, let's go to passage number 5. Now, passage number 5 is about what? You know, every child, again, my gut feeling says, with a bit of bias, that every child who's preparing for CLAT should be fantastic with law of contract. And more fully, when I talk about law of contract, what you should be good at. At least with reference to this passage, I'll tell you three things that you must know. That is agreement and restraint of trade and proceedings, agreement in restraint of trade and profession, agreement and restraint of legal proceedings, agreement and restraint of marriage. They are void and that you should understand holistically. Now, with that point clear, when we see passage number 5, the question is, all right. The question is, if by the virtue of any agreement, किसी agreement से अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को absolutely restrain करती है कि आप legal proceedings initiate नहीं कर सकते, या ऐसा एक कंडीशन इंपोज कर देती है कि आप एक रेलेवेंट कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते अगर आपका राइट वायलेट हो गया, या एक ऐसी टाइम लिमिट इंपोज कर देती है जो कि अनरीजनेबल है कि विद इन दिस टाइम अगर आपने रेमेडी ली तो ठीक है, वरना बाद में आपके पास रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी, या अग्रीमेंट में एक इम्यूनिटी फ्रॉम लाइबिलिटी, मतलब अगर कुछ भी हो जाए हम कभी लाइबल नहीं होंगे. सीधी सीधी बात है, if a person's right is violated, he has a right to move to the appropriate court. लेकिन अगर अग्रीमेंट में पार्टीज ने एग्री कर लिया कि एक पार्टी बोलती है दूसरी पार्टी को कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, तो सच काइंड ऑफ अ क्लॉज इज अ वॉइड क्लॉज. सेकेंडली, अगर बोल दिया कि इतने लिमिटेड टाइम में कोर्ट जाना है, तो सच काइंड ऑफ क्लॉज इज ऑल्सो अ वॉइड क्लॉज. एंड थर्ड, कि बाय यू कैन नॉट अप्रोच एनी कोर्ट, देन अगेन दैट इज वॉइड. So such kind of agreement is agreement and restraint of legal proceedings. But there are exceptions. ये exceptions दिए. पहली क्या है? Arbitration अगर है, again similar kind of theme we had in CLAT 2021 paper. अगर arbitration का agreement है, तो ऐसा agreement को valid मानेंगे and it would not be an agreement in violation of legal proceedings. तो ये सही है. दूसरा exception है कि लिमिटेशन एक्ट में अगर 3 इयर्स का पीरियड दिया हुआ है और इतनी ही लिमिटेशन का पीरियड किसी और पर्सन ने अग्रीमेंट में मेंशन कर दिया, तो देन अगेन इट इज नॉट एन अग्रीमेंट जहां प्रॉब्लम हो, ऐसा अग्रीमेंट वैलिड होगा. देन अगर कहीं पे मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शंस हैं टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स, इफ देर आर मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शंस टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स, अगर एक केस में ज्यूरिसडिक्शन 3 शहर बनता हो, दिल्ली भी हो, मुंबई भी हो और इंदौर भी हो, और ऐसे केस में पार्टीज ने दिल्ली मुंबई छोड़ के अग्री किया कि कभी भी डिस्प्यूट होगा तो वील हैव अ सूट इंस्टीट्यूटेड इन इंदौर, तो ऐसा अग्रीमेंट वैलिड है, इन दोनों जगह का जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाएगा. दिस इज व्हाट इज रिटन इन क्लॉज 3. तो ये था पैसेज ऑल अबाउट. नाउ कमिंग बैक फटाफट ऑन क्वेश्चंस. in this question, when we see A and B has signed the contract, now what is written, what is the most relevant thing? No case shall be instituted against the company anywhere in such regard. Now this is restraining a person's freedom to move to the court. All right. So in this case, can be sue? Answer is yes. गलत है, गलत है, perfect है. This is wrong reasoning. See, Calcutta happens to be the correct answer for question 22. Let's go to question number 23. Vidhan and Vidyut were two contracting parties for the sale of mangoes. Contract was entered in Indore. They agreed कि कभी भी dispute होगा. ये exception 3 पे है. Exception का जो clause है ना 3, उसमें लिखिए ये बात.
ऐसे केस में they've agreed Indore and now a case is filed in Ujjain. So what can be done? Cannot file in Ujjain as it's agreed. ये exception. People would have marked C as well. This is a wrong reasoning. 23rd is D. People marking D, great going. It was a good question. People getting right. I'm happy. Let's check with question number 24. They said that in case of any dispute, none of the parties shall approach the court. None. Anywhere in the country. Such kind of agreement is what? It's an agreement in restraint of legal proceedings. All right. So when you talk about this agreement, see, Calcutta is the answer without a doubt. Question number 24. Everybody, buck up with your speed. कृतिका, अभिषेक जोशी, समता गुप्ता, अभय गुप्ता, मधुरा। कुछ 4-5 बच्चे हैं जो ये रेगुलरली रहते हैं, बाकी कुछ आते हैं जाते हैं, रिप्लाई नहीं करते। किसी सेशन में बैठे हो, लाइव सेशन में, सो इफ द मोर यू इंटरैक्ट and the more fast you are, it's a motivation for the other person also to be involved and deliver better. Anyways, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। In one of the terms of the agreement signed by Y and Z, it's mentioned that यहाँ पे हमने पढ़ा था एक्सेप्शन में कि लॉ ऑफ लिमिटेशन में अगर 3 years का टाइम लिया हुआ है एंड हियर इट इज मेंशन 3.5 years, तो क्वेश्चन इज 3.5 years is any which way not covered. Are you getting this? So cannot, ये नहीं होगा, नहीं होगा, 1 year की बात कहीं से नहीं हो सकती, 3 years की बात दी हुई है एक्सेप्शन में, डी दिल्ली इज द आंसर, 25 is D Delhi, Mahima making mistake, Deepika making mistake, Alok making mistake, Aviral, Laksh, Tanish going good with Vishnu Priya and Siddharth Sharma, Madhura as well. Madhura going wrong. Going wrong. चलो रचित गलत है बेटा, नहीं चलेगा। ठीक है, all right. Let's go ahead. Oh, it's done with the question. Ranil and Rukesh की कहानी थी, उसने बोला कि you already owe me a big amount of money, so you cannot sue. Now this is a flawed logic. It's a proper agreement and restraint of legal proceedings, so such a condition depriving a right to sue is not allowed by the law. Answer is D Delhi without doubts. Question number 26 जाने से पहले ये वाला जजमेंट देखते हैं, हिजाब वाला। ऑलराइट, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। I've been pressing so much about Indian Express because I have some reasons to consider Indian Express as a condition precedent, as an important tool for a student preparing for CLAT. Anyways, coming back, कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट आया हिजाब पे। इसमें what is the thing lined up? They're talking about doctrine of essentiality. Now they're saying that Indian Constitution, I'll tell you the plot basically. There is a law that is passed by state saying that hijab is not a compulsory thing, and when you're going to schools, you should not wear it. Now, this was being challenged on the grounds that we have freedom of religion under Article 25, 26, 27, and 28 specifically. For the purpose of this article, basically 25 and 26 is referred just for the sake of comparison. So, under Article 25, a person is having freedom to practice, profess, and propagate the religion of his choice. In this case, a person is being deprived from practicing, propagating the religion of his choice, and they're saying that in case such a matter comes to the court applies a doctrine which is called the doctrine of essentiality. वहां ऐसा बोला गया कि अगर कोई प्रैक्टिस एक रिलीजन का essential tenet है, I repeat, तो ऐसे केस में कोर्ट इस बात को इंक्वायर करेगा क्या ऐसी प्रैक्टिस उस रिलीजन की एक रिलीजियस टेनेट है, एक रिलीजियस
इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, एक इसेंशियल प्रैक्टिस है, और अगर इसेंशियल प्रैक्टिस है तो कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगा। लेकिन अगर इसेंशियल प्रैक्टिस ही नहीं है उस रिलीजन की, तो सच प्रैक्टिस कैन बी गिवन अ गो बाय, एंड इन दैट पर्टिकुलर केस एन एडवर्स जजमेंट कैन बी पास्ड बाय द कोर्ट। अब इसमें व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग। कोर्ट ने बोला कि इसेंशियलिटी टेस्ट, कि क्या वो प्रैक्टिस उस रिलीजन के लिए इसेंशियल थी। इस पे ऑथर इज क्रिटिसाइजिंग कोर्ट, सेइंग कि ऐसा करके कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट वो काम कर रहा है जो उसकी कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। रिलीजन जाके रिलीजियस इंक्वायरी करना कि वेदर दिस प्रैक्टिस इज एसेंशियल इन अ पर्टिकुलर रिलीजन और नॉट। तो क्रिटिसिज्म इज रादर देन अ जज इज टेंडिंग टू बिकम अ क्लर्जीमैन, राइट। सो टेम्पल एंट्री केस, इस वाले शिरूर मठ का केस इसमें दिया हुआ है, बोला अनटचेबिलिटी वाज नॉट एन एसेंशियल हिंदू प्रैक्टिस एंड दस इट शुड बी शन्ड। सबरीमला केस के बारे में ये लिखा हुआ है, एक क्रिटिसिज्म दैट सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज इन डाउट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन्स, वेदर कोर्ट शुड अज्यूम द रोल ऑफ अ क्लर्जी। ये क्रिटिसिज्म है सुप्रीम कोर्ट का विद रेफरेंस टू एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन। एसेंशियलिटी क्या, अगर एक रिलीजन के लिए एसेंशियल है तो वो प्रैक्टिस करने देना चाहिए, आर्टिकल 25 में फंडामेंटल राइट है। The court concluded that the freedom under Article 25 have been subordinated and made subservient to other fundamental rights. Article 25 आप पढ़ेंगे भी तो क्या लिखा रहता है, सब्जेक्ट टू हेल्थ, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, है ना। तो इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, इट्स सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। एनीवेज, then they have made a comparison saying that individual right versus denomination का right 25-26 के बारे में, and then शिरूर मठ केस में बोला आर्टिकल 25 के अंदर रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस जो इंटीग्रल हो एक रिलीजन के, जुडिशरी को आके उसे देखना पड़ेगा, अगर इंटीग्रल हैं तो ऐसे केस में उनको एसेंशियल मानते हुए कंटिन्यू करना चाहिए, अगर इंटीग्रल नहीं है, एसेंशियल नहीं है, तो उन्हें डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। आखिरी कंपैरिजन ऑथर ने किया यूएस को लेके। यूएस में एक डॉक्ट्रिन है जिसे बोलते हैं असर्शन टेस्ट, जहां पर एक पर्सन asserts that a particular practice was a religious practice। अगर एक पर्सन सिर्फ ये असर्शन कर दे कोर्ट में कि ये जो मैं प्रैक्टिस करता हूं ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, the assertion which is required by the court in US is if a plaintiff or a petitioner asserts in the court that such practice is a religious practice, तो कोर्ट उसके अंदर जाता ही नहीं है प्रूव करने के लिए, and that is considered। So with that point clear, let's go into the questions। Question number 27। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 27 में एक लॉ है वेयर पीपल कैचेस लाइव स्नेक फ्रॉम जंगल, बोला ये हमारी इसेंशियल प्रैक्टिस है। ड्यूरिंग द केस इट वाज फाइंड दैट द वर्शिपिंग स्टैच्यू ऑफ स्नेक, यहां पे लाइव स्नेक पकड़ रहे थे, बोला ये हमारी प्रैक्टिस ऐसे कंटिन्यू करेंगे इन द गार्ब ऑफ रिलीजन। और यहां पे बोला वर्शिपिंग स्टैच्यू ऑफ स्नेक वाज एसेंशियल, तो स्टैच्यू से काम हो सकता है तो पकड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब ये एसेंशियल नहीं है। एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन पे ये क्वेश्चन फेल हो गया। व्हेन दिस क्वेश्चन सिंपली फेल्स ऑन एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन, वी गेट टू अंडरस्टैंड इसका आंसर होने वाला है नो, तो ईदर बी और डी। बी सेज मेकिंग सेंस, नो दे विल नॉट पास दैट मियर असर्शन इज नॉट इनफ, दिस इज रॉन्ग रीजनिंग, दिस इज राइट। और मैं जब भी आंसर करूंगा, आई एम गोइंग अ बिट क्विकर टुडे, आपको यस वाले ऑप्शंस भी पढ़ना है। Since I've written this paper, so I know everything about it, but still you should always read options and you should have a conviction। मेरा conviction तो है ही, बी आंसर है, कहानी खत्म। Let's go to the question number 28। एक न्यू लॉ आया जहां पे स्टूडेंट्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग एनी टाइप ऑफ हेड स्कार्फ इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ए और बी एक रिलीजियस ग्रुप के मेंबर्स थे, वहां पे लिखा था ऑल फीमेल मेंबर्स शुड वियर अ हेड स्कार्फ इन पब्लिक। It established that such practice is one's religion's required behavior according to religious holy writings। अब ये essential practice हो गई, and when we say that it is an essential practice in question number 28, तो essentiality की doctrine confront हो जाती है, आंसर हो जाता है ए आगरा। वेरी गुड एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 29 में इन एडिशन टू द अबव क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन में कुछ एडिशन करते हैं। न्यू रेगुलेशन स्टेट दैट नो मेल विल बी अलाउड टू कीप फेशियल हेयर्स इन द स्कूल except for the student whose religious ban cutting off hair or shaving of face। It makes an exception for some people on religious grounds। Students of XYZ religious community were removed from classroom base because they did not follow the new law। They had lengthy beards and said that it was vital religious practice because their faith forbade them from shaving their face and
Many holy writings of XYZ religious demonstrate that practice is commonly followed. Now, here is my answer, but not uniformly. That means not essential. It fails on the doctrine of essentiality. Ishika saying Delhi is wrong. ये essential है ही नहीं. Answer will be C, Calcutta. Answer is negative. Good, Samta. Let's go to question number 30. The government of X has passed a law against animal cruelty. Live snake from jungle, wherein every year people belonging to religion class catch live snake so that they can worship. Infringement of fundamental right to religion. During the case, it was found that worshipping snake is essential in the religion as contended by petitioners. Now the question, will the practice of JPG religion pass the assert test of USA? Now, when we talk about the assert test of USA, now this is nothing to do with Indian law. Article 25 से इसका लेना देना नहीं है. क्वेश्चन ये है, असर्शन टेस्ट वाला जो डॉक्ट्रीन है क्या उसको विथस्टैंड करेंगे? वहां पे क्या रिक्वायर्ड था? अगर पिटिशनर सिर्फ इतना असर्ट कर दे कि ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, then court will not probe. So what is essential? That they should assert that it is a religious practice. Now look into this question. Yes, it will pass the assertion test as the practice of worshipping snake is a religious practice. Making sense. Yes, it will pass the assertion test as assertion is seen from the perspective of the person making the claim. Here A and C, both options are yes and both are having one or the other reasoning, but the question is such practice should be a religious practice. Assertion is बात का होना चाहिए कि it is a religious practice. If the assertion is that it is a religious practice, then the courts in US is not going to probe. Answer is going to be A, not C. People marking C have committed error. समझ में आया? Going to question number 31. Which of the following inference can be drawn from the passage? Now, when we talk about which of the inference can be drawn, the fundamental right to religion is supreme. No. In case of conflict with other rights superior, it is antithesis. इसका उल्टा लिखा हुआ है. An essential religious practice test leads to the results which are best suited for the modern time. No. The essential religious practice test is still in question before Supreme Court. Yes. Answer C, Calcutta. 31 is Calcutta. Good. Wonderful. Now, question passage number 7. Oh, passage number 7 is related to a law in Texas. Now, a law in Texas says, एक law के बारे में एक critical analysis है. There is a law which is called the heartbeat bill. मतलब वहां पे ये है कि it is against the termination, medical termination of pregnancy. और बोला कि एक जो नया law आ रहा है वो एक strong law है against the termination of pregnancy. और उसका criticism ये है कि उसके अंदर extreme measures हैं जहां पे प्रेग्नेंट विमेन हु इज अ विक्टिम ऑफ रेप और एन इंसेस्ट उसको भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का राइट नहीं है. फर्दर इंक्लूडिंग पीपल इन नो कनेक्शन विद डॉक्टर और विमेन, इन लोगों को भी ऐसे केस में स्यू किया जा सकता है. और पीपल, एक आम आदमी के पास राइट है स्यू करने का. The bill bans the abortion after a fetal heartbeat can be detected, specifying a time frame. अब इसमें बोला ये जो मीनिंग है वर्ड हार्टबीट, अनप्रेसिडेंटेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनली ब्रॉड लैंग्वेज जो इतने सारी चीजों को कर लेती है. इसका एम्बिट बहुत ब्रॉड है और बहुत वेग है, शायद उतनी जरूरत नहीं है. द बिल्स पैसेज कम एज अ कंजर्वेटिव स्टेट हाउस. अब इसमें बोला है जो यूएस के कंजर्वेटिव स्टेट्स हैं उनके लेजिस्लेचर ये चाहते हैं कि वो कर्टेल करें अबॉर्शन एक्सेस. एंड with this heartbeat bills passed by the other state houses have been blocked by court, Texas lawmakers believe the legal language in their version makes it
अब इसमें हो रहा है कि अलग अलग स्टेट में जब ये प्रेगनेंसी लॉ आया तो उसे कोर्ट ने टिंकर कर दिया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। लेकिन जब टेक्सास ने ये लॉ इंप्लीमेंट किया तो टेक्सास का ये मानना था कि जिस तरह की लैंग्वेज हमने हमारे लेजिस्लेचर हमारे लेजिस्लेटर्स ने यूज की है और हमारा वाला वर्जन है वो स्ट्रॉन्गर है, वो कोर्ट में अगर इसकी कभी स्क्रूटनी होती है, जुडिशियल एक्टिविज्म में देखा जाता है कि वेदर इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल। दैट इज द बिलीफ ऑफ द Texas lawmakers, that is legislators in the state of Texas. Further, but the provisions are controversial, and the lawyers who sent the letter to the House of Lawmakers said it contravene the Texas Constitution and undermine a long-standing rule and tenets of a civil. एक तरफ लोग बोल रहे हैं इस लॉ में डेफिनेशन के फ्लॉज हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, मीनिंग क्लियर नहीं है हार्ट बीट का, बहुत ब्रॉड इसका एम्बिट है, ऐसे कंजर्वेटिव लॉ की जरूरत नहीं है। वहीं पर जो लॉ मेकर्स हैं वो बोल रहे हैं कि इसकी जरूरत है और जो हमने लॉ ड्राफ्ट किया है वो दूसरी स्टेट की तरह नहीं है, दैट विल बी एबल टू विथस्टैंड द टेस्ट ऑफ लीगैलिटी इन सुप्रीम कोर्ट। फर्दर, North Dakota becomes the first state in US to pass heartbeat bill. Later, several other states passed, वगैरह वगैरह. These states are Bible Belt in US. It's a region वगैरह वगैरह जिसे conservative Christianity वगैरह वगैरह बोलते हैं. तो ये ओवरऑल उस कहानी है उस एक लॉ की क्रिटिसिज्म की. It is a good one from the Texas Tribune, and I think you would have enjoyed this passage. It will have a good impact in your preparations as well. Let's see the question. What major legislative change does Texas heartbeat law propose? Now, when you talk about what major changes does they propose, फटाफट अगर इसको देखें तो we have a simple understanding. Fetal heartbeat can be detected. उसके बाद abortion is not possible. B. Bombay is the answer. समझ में आया? Heartbeat law legalizes, गलत है, ऐसा तो लिखा ही नहीं है. Bans after 12 weeks, it cannot be ascertained extraneous. Allows individual to file a suit, not at all given in the passage. All right, going to the next question. According to the information provided in the passage, which of the following is not a problem in the said law? It does not provide specific time frame is a problem. ये तो problem है. Family members और इन सब लोगों के against में भी हो सकता है. Could be subject to lawsuit. ये भी इसकी problem है. The proposed law will provide a person who has no connection with either doctor a right to sue. ये भी problem है. The law shall boost the market. ये cannot be. I mean, this is not a problem. So in this question we get to understand 33 का D. बाकी तीनों तो problems लिखी हुई है ना. What do the abortion right advocates say? उनका टेक्सास हार्टबीट लॉ का क्या कहना है? अबॉर्शन राइट एडवोकेट्स जो ये कहते हैं कि होना चाहिए. Now the abortion right about this law, they are critical. They are against it. The legislation is amongst more extreme measures nationwide and does not exempt people. सीधी सीधी बात है. Their view is critical about it. Answer for 34 is A. Agra, without an iota of doubt. ये सारे क्वेश्चंस में रीजनिंग आपको फटाफट बता रहा हूं. वी आर गोइंग अ बिट क्विकर. कहीं आपको लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, यू कैन ऑलवेज आस्क. Why Texas lawmakers believe that their act might not be blocked by the court? Because they use that our version of language is stronger, is legally better. Persuasive language, no. Strong legal language, पढ़ा था हमने. Goodwill of the courts, no. Believe that, no. Answer is Bombay. 35 is B. Bombay. All right. Now we come to 36. What might be the reason of heartbeat bill introduced many state of Bible Belt? Because they are conservative. ऐसा लिखा था ना उसमें. आपको समझ में आया? इंडिया में जो लिबरल्स हैं या कीपिंग इट शॉर्ट जो लुटियंस हैं, they have been using a word called cow belt. है ना? एक पर्टिकुलर रीजन को, एक पर्टिकुलर रीजनल लैंडस्केप को बोलते हैं काउ बेल्ट है, और जो इंडियन इलेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है. ये काउ बेल्ट जैसे वर्ड बेसिकली यूएस से आते हैं, जहां वो लोग कंजर्वेटिव स्टेट्स को बोलते हैं बाइबल बेल्ट. एनीवेज, तो इसका आंसर इज ऑफ कोर्स ए आगरा. बट वी हैव टू सी वेयर दीज वर्ड्स ओरिजिनेट फ्रॉम.
अब फटाफट आते हैं, ये वाला पैसेज थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला पैसेज है, आप लोग समझिएगा इसको। दो चीज होती हैं, एक होता है ट्रेडमार्क। अगर आपके पास एक ट्रेडमार्क है, आप एक एग्जांपल देता हूं, एक पर्सन के पास एक ट्रेडमार्क है पार्ले जी। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसने रजिस्टर करा लिया होगा और या उसने रजिस्टर नहीं कराया होगा। क्या कर सकता है एक आदमी ट्रेडमार्क के साथ? या तो उसका रजिस्टर्ड मार्क है या उसने रजिस्टर नहीं भी कराया होगा। अगर किसी ने ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रखा है और कोई उसी के ट्रेडमार्क को यूज करके बेचता है, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं रेमेडी इज सूट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। ये वर्ड होता है इन्फ्रिंजमेंट, कि एक पर्सन का राइट है कि उसके नाम के ट्रेडमार्क को जो उसने रजिस्टर करा रखा है आप यूज करते हैं। दैट मीन्स एक पर्सन के पास अगर राइट है तो उस राइट में ही इज वेरी क्लियर, एंड आई रिपीट, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, ट्रेडमार्क लॉ से रिलेटेड, कि एक पर्टिकुलर ट्रेडमार्क अगर एक पर्सन के पास है तो दो ही चीज हो सकती हैं, या तो सिर्फ वो नाम यूज करता है, उसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, और या उसने रजिस्टर कर रखा है। अगर रजिस्टर कर रखा है और कोई आदमी उस ट्रेडमार्क को यूज करता है, वो सीधे कोर्ट जाएगा, बोलेगा मेरा राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, तो वहां पे जो रेमेडी होगी उसे बोलते हैं सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक पर्सन बहुत समय से एक मार्क को यूज करता है लेकिन उसने रजिस्टर नहीं कराया, और ऐसे केस में जब उसने रजिस्टर नहीं कराया, 10-15 साल से उसने उस मार्क को बहुत पॉपुलर कर रखा है, और बाद में लेटर जिसने मार्क को बहुत पॉपुलर कर रखा है, पर लेटर कोई उसी मार्क को और यूज करने लगता है। दैट मीन्स अ पर्सन हु इज द ओनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, हिज गुड्स, his trademark is used by any other person for passing off his goods। मतलब पार्ले जी अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा तो सूट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट होगा, कोई इशू ही नहीं है। लेकिन पार्ले जी मान लेते हैं रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है, तो ऐसे केस में पार्ले जी अनरजिस्टर्ड है, 50 साल से बिक रहा है। अब एक पर्सन है इंदौर में, उन्होंने एक और ब्रांड बनाया पार्ले जी, और अब एक कंफ्यूजन हो रहा है लोगों के मन में, और अब क्या हो रहा है, इस पार्ले जी की गुडविल को नुकसान हो रहा है। इस पार्ले जी की फोनेटिक बोलने में सिमिलर, लोग पार्ले जी जानते थे, इसने एक और पार्ले जी बना दिया। ये जो है प्रोसेस, इसे बोलते हैं पासिंग ऑफ। मतलब एक आदमी एक पॉपुलर ब्रांड के नाम को यूज करके अपने गुड्स जो कि उस ब्रांड के नहीं है, लोगों को डिसेप्शन से या कंफ्यूजन क्रिएट करके पास ऑफ कर देता है। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं पासिंग ऑफ, वेयर अ पर्सन ही passes ऑफ हिज गुड्स टू अदर्स with either a deception or giving a feeling which causes confusion in the minds of other persons। पार्ले जी अगर रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड होता तो इन्फ्रिंजमेंट होता, तो वो तो किस क्वेश्चन में है ही नहीं, इस पैसेज में ही नहीं है। अब यहां पे पार्ले जी एक फेमस ब्रांड है पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसमें पासिंग ऑफ का केस हो सकता है। इंदौर में एक पर्सन है मिस्टर एक्स, इनने पार्ले जी का PAARLERLEG नाम से बिस्किट बनाया, और ऐसे केस में जब वो अपना बिस्किट बेचते हैं तो कंज्यूमर के मन में क्या जाता है कि ये ओरिजिनल पार्ले जी का है, और एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक दूसरा पर्सन पार्ले जी की रेप्यूटेशन यूज करके अपने गुड्स को पास ऑफ कर रहा है। ऐसे टाइम पर जो पार्ले जी ओरिजिनल कंपनी है, ये इंदौर के इस ब्रांड के अगेंस्ट में एक सूट इंस्टीट्यूट कर सकती है, जिसे बोलेंगे सूट ऑफ पासिंग ऑफ, सिविल सूट ऑफ पासिंग ऑफ। और उसमें सबसे पहली रेमेडी ये है कि कोर्ट बोलेगा कि सबसे पहले जो तुम नकली बेच रहे हो उसे बंद करो, उसे बोलते हैं इंजंक्शन, एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विच इज रॉन्ग। तो बेसिकली ये पैसेज इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पासिंग ऑफ। पासिंग ऑफ थोड़ा कम शब्दों में समझ में आया या नहीं आया? अगर इतना बैकग्राउंड पता होगा ना तो ये पैसेज समझ में आएगा, अदरवाइज you'll not enjoy it that much, and I've described it in very little words, in very less words, in very fewer words, so I hope you understood। समझ में आया तो वाई लिख दो जल्दी से, है ना। ट्रेडमार्क के बारे में यूटिलिटी लिखिए कि ट्रेडमार्क से कंज्यूमर कंफ्यूजन नहीं होता, इसलिए ट्रेडमार्क जरूरी है। फिर लिखा है कि अगर कोई पर्सन पासिंग ऑफ करके अपने गुड्स को
दे दे तो ऐसे केस में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब क्या, कॉम्पनसेशन लिया जा सकता है। द एक्शन ऑफ पासिंग ऑफ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इन पासिंग ऑफ इट इज नॉट एसेंशियल दैट प्लेंटिफ मस्ट स्टैब्लिश फ्रॉड ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट इन पासिंग ऑफ एक्शन। मतलब अगर पासिंग ऑफ का केस हो तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें एक एलिमेंट फ्रॉड का हो, वो फ्रॉड नहीं कर रहा पर फिर भी उसके कारण अगर कंज्यूमर कंफ्यूजन हो रहा है तो भी पासिंग ऑफ का केस होगा। देन ये केस में इस पूरे पैसेज में हॉर्लिक्स के बारे में बताया हुआ था कि हॉर्लिक्स की सिमिलर नाम से कोई बेच रहा था, इसको पासिंग ऑफ बोलेंगे, अपने सामान को दूसरे के ब्रांड के नाम के सिमिलर नाम से रख के बेच दें, जिससे कि अगले पर्सन को ये कंफ्यूजन हो कि वो एक्स ब्रांड का है जबकि वो उस ब्रांड का आइटम नहीं है। और व्हाट इज रिक्वायर्ड, इंजंक्शन वुड बी ग्रांटेड। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड whether expressly or otherwise, absence of actual deception is not सीधी सी बात है, एक पर्सन अपने सामान को अगर दूसरे पॉपुलर ब्रांड, ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड, ऑलरेडी स्टैब्लिश ट्रेडमार्क के नाम से आगे निकाल देता है तो उसका इंटेंशन फ्रॉड का हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, उसको हम पासिंग ऑफ ही बोलेंगे। एंड डिफेंडेंट अगर किसी, मान लीजिए टाइटन नाम की घड़ी है और अभी एक पर्सन ने पेन बनाया टाइटन नाम का, तो फर्क नहीं पड़ता कि वो सेमी फील्ड क्यों हो, अगर वो ट्रेडमार्क किसी का है तो उसके नाम से आप प्रोडक्ट पास ऑफ नहीं करें। रेमेडीज इन द फॉर्म ऑफ इंजंक्शन व ग्रांटेड वगैरह वगैरह। ओनरशिप इज गवर्न्ड बाय प्रायोरिटी इन यूज इन सच मार्क्स। कभी कभी क्या होता है, मान लेते हैं अपना स्वीट्स, बहुत सिंपल सा नाम है, ये एक 1950s में दुकान खुली थी इंदौर में, और मान लेते हैं कि 1980s में किसी ने और दुकान खोल ली इंदौर में। अब ये क्योंकि 30 साल तक अपना बहुत सारा खर्चा कर चुके थे एक ब्रांड बनाने में अपना स्वीट्स, भले ही इन्होंने रजिस्टर नहीं किया, अब जो पहले से यूज कर रहा है, जो सुपीरियोरिटी इन यूज लिखा हुआ है ना, जो प्रायर यूज कर रहा है मार्क, उसके पास राइट है कि वो अगले वाले को मना कर दे कि आप अपना स्वीट के नाम से सामान मत बेचो बिकॉज इट अमाउंट्स टू पासिंग ऑफ। ये इस पैसेज में लिखा है। द फर्स्ट यूजर इन द सेल ऑफ गुड्स is the owner and the senior user. In order to succeed, the plaintiff has to establish that the user of the mark in the time then the impugned user was the respondent. मतलब पहला यूजर कौन है, मतलब हम लोग ये देखेंगे सुपीरियरिटी इन द यूज ऑफ मार्क, पहले कौन यूज कर रहा था, जो कर रहा है वो ला सकता है। पैसेज में मजा आया, आया नहीं आया, आया तो बढ़िया, इंजॉय, कीप लाइकिंग, ठीक है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। Now, when I talk about question number, the questions that we have in the final passage. Vidhan and Nidan are two brothers. They started a business with a goodwill inherited from their family under the same brand but at different location. जब इन दोनों ने गुडविल को इनहेरिट किया है, आई रिपीट, ऐसे केस में जहां इन दोनों ने गुडविल को इनहेरिट किया है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, जब गुडविल ही इनहेरिट हुई है तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता कि वो दूसरे के सामान को अपने सामान के नाम से पास ऑफ कर रहा है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन रिमेन्स वेरी 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 सिंपल। पासिंग ऑफ तो होगा नहीं, विधान विल विन नहीं, निदान विल विन, डी डेली इज द आंसर, एवरीवन मार्किंग डी डेली, गुड। पैसे समझ में आ गया तो आंसर में दिक्कत नहीं आती, इसलिए वी हैव स्पेंड सम टाइम। XYZ is a reputed noble global comic company who's known for their immersive storytelling method they employ in their publishing and movie business. क्या बात है उनकी, they are distinctly made out by their distinct designs, typical font and handcrafted image by the customers due to uniqueness and exclusivity. है ना, वो अलग ही तरीके से लिखते हैं उसको, उनके फोंट बहुत अलग हैं। If another magazine MNC Limited, a comic company from India, inducted identical fonts पिक्चर्स टू देयर कॉमिक मूवीज एंड मर्केंडाइज विदाउट बैड इंटेंशन, वहां हमने पढ़ लिया इंटेंशन रेलेवेंट ही नहीं है, कैन इंजंक्शन बी ग्रांटेड, यस, बिकॉज दे हैव सिमिलर फॉन्ट्स।
ठीक है, correct. People marking 38A, they are good. They are good. Going with question number 39. Which will be true in the last mentioned questions fact if the company ABC is trading in chocolates? हमने पढ़ा जैसे टाइटन का जहां मैंने एग्जांपल दिया था precisely when I was talking about this Titan, whether the defendant trade in the same field or in different products, दोनों में passing off maintainable है. So going with question number 39, XYZ will have a legal recourse, will not have wrong, both companies wrong. 39 is A, Agra. Going with question number 40. Owner of a brand Campos और इनने नाम रख दिया Campros. तो क्या हो रहा है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के एस्टैब्लिश नाम के यूज करते हुए फोनेटिक सिमिलैरिटी, बोलने में सेम लग रहा है ना, फोनेटिक सिमिलैरिटी को यूज करते हुए अपने गुड्स को पास कर रहा है. सो व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? दिस इज पासिंग ऑफ. The answer to this question is what? The answer to this question is A, Agra. ठीक है. So that's all from my end. If you have anything in the back of your mind, just bring it on. चलो, I think we've got good time. We enjoyed together. Gladiator series में मजा आ रहा है तो just like this and मेहनत करो, पढ़ाई करो, और we would like when your hard work it pays off well. So to keep it short, I repeat that in my opinion, मैं अभी आप लोगों के स्कोर से पहले, जिसने 35 से ऊपर नंबर मारे, स्टेलर परफॉर्मेंस. 32 and more, good performance. 30 or more, decent performance. 24, average performance. 22 से कम आए, मेहनत करनी पड़ेगी, काफी नहीं है. ठीक है. और आज के पैसेज का ISS क्या होता और how do I see the overall things, that I'll update you on your personal Telegram thing. So to everyone, it's time to sign off. It was pleasure having you at Gladiator series. You, us together will work hard and make it large. All the best to you. And yes, याद रखना, मेहनत करेंगे और फाइनली जीतना तो हमें ही है. All the best everybody.